Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the third lecture of Spoken English and Advanced Communication. I'm your mentor, Myra Qureshi. So आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Everyone, please pay attention because it's going to be a very important lecture. First of all, हम लोग सीखेंगे previously हमने इंटरव्यूज पे बात की थी. एक स्पोकन एक्सपर्ट के लिए इंटरव्यू प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू स्किल्स को एक्वायर करना, इंटरव्यू स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं. और सबसे ज्यादा आपके लिए इंटरव्यूज में ही आपकी स्पोकन स्किल्स को असेस किया जाता है. सो उसी मॉड्यूल को आगे लेकर चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे. आज हम स्टार मेथड पढ़ेंगे टू एस एन इंटरव्यू. एक ऐसा मेथड जो आपको हेल्प आउट करेगा ना सिर्फ इंटरव्यूज में उन ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर देने में, बल्कि बाकी सिचुएशंस में भी, बाकी कन्वर्सेशंस में भी, जब आपके बिहेवियर को असेस करने के लिए, आपके टैलेंट्स को असेस करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि अक्सर लोगों को ट्रिक कर जाते हैं, अक्सर लोग उसका आंसर नहीं दे सकते और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठते हैं. आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करना सीखेंगे थ्रू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अ की, कम्युनिकेशन इज द पावर. आज आप देखेंगे कि कैसे आप इस पावर को यूज करके अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस और सिनेरियोज को टैकल कर सकते हैं. सो इट्स अ स्टार मेथड फॉर यू टुडे. सेकेंडली, हम टेंसेस स्टार्ट करें. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर में कम्युनिकेशंस पर अबूर हासिल करने के लिए यू डोंट हैव टू लर्न और प्रैक्टिस ऑल द 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस. सो वी हैव सम 3 to 4 tenses which we have to get our expertise in. So today we are going to be looking, we are going to be exploring, we are going to be learning together present tense. Usage of present tense in communicational and situational English. Present tense एक ऐसा tense है जिसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है आपकी कम्युनिकेशंस में, डेली बेसिस पर. सिचुएशनल इंग्लिश में भी आपको डिफरेंट सिचुएशंस पर, वर्क प्लेसेस पर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बातचीत करनी होती है प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हुए. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट इट with reference to a speaker. And third most important, phrasal verbs. Phrasal verbs आपको native like sound करने में help करते हैं. Phrasal verbs बहुत important होते हैं. If you learn them, they will help you out to achieve accuracy and fluency in English. So these are the 3 things which we are going to be discussing in today's lecture. Attainment targets. After this class you should be capable to answer the question जो आपसे इंटरव्यूज में या सिचुएशनल इंग्लिश में पूछे जाते हैं by using the STAR method. Secondly, you should be able to work on your tone and body language to master communication. Thirdly, you should be able to understand and use present tense fearlessly. So are you ready to learn these 3 topics? Excited people? Let's begin with the STAR method then. What is STAR method and why should we learn and get a good grasp on this topic? So STAR method, as I've already told you, एक ऐसा method है जो आपको help out करता है in answering the questions which intends to study your behavior. एक ऐसा मेथड है जो आपको आंसर करने में हेल्प करता है उन तमाम क्वेश्चंस का जिनका इंटेंशन होता है टू चेक, टू टेस्ट योर बिहेवियर, टू असेस योर बिहेवियर. सो वी बेसिकली डिवाइड इट, ब्रेक इट डाउन दिस स्टार इनटू S, T, A, R, and all of these alphabets, all of these letters have a different meaning. What does S stands for? S stands for situation. S stands for situation. T stands for task. A stands for actions. And R stands for results, outcomes. So whenever you are answering a question that intends to check your behavior, that intends to assess your talent, you answer it in the form of a paragraph, either verbally or in written communication. In a form of a paragraph, you break your paragraph into situation, task, action and results. So आप क्या करते हैं? आपसे पूछा जाता है किसी ऐसे कस्टमर के बारे में, किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कीजिए जो इंतहाई डिफिकल्ट थी टैकल करना. इमेजिन कीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और आपके इंटरव्यूवी ने आपसे पूछा है, इमेजिन कीजिए
कि आपके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट बदतमीज किस्म का कस्टमर बैठा हुआ है, who is trying to let you down, who is not listening to you, who is not paying attention to you, और वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा. अगर आपको उससे डील करना पड़े, अगर आपको उसको टैकल करना पड़े, how would you do it? आप क्या करेंगे? How will you answer such questions? आप इन क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टार मेथड में ब्रेक करेंगे. तो सबसे पहले आप सिचुएशंस को डिस्क्राइब करेंगे. यू विल टॉक अबाउट द सिचुएशन. बात किस तरह से शुरू हुई, एनवायरनमेंट क्या था, सिचुएशन क्या था. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ फ्रेश मंडे मॉर्निंग आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस when a very angry, very furious customer came and he started talking bad things, giving bad reviews about our company. I was trying to stop him, but he was not, he kept on talking about it. Then situation बता दी, 2 से 3 words में आपने situation describe कर दी. Then you will talk about your task. Situation के बाद आपका task क्या था. Since I was a manager in the situation, or in the company, I was given the responsibility to handle all the problems, to handle the customer and calm him down. So आपका क्या task था वहाँ company में? You were supposed to handle such tricky questions ताकि आपका environment बेहतर रहे और आप उसको tackle कर पाएं. Thirdly, आप क्या करेंगे? अपना action बताएंगे. So what did you do? First of all, ना चाहते हुए भी, you listened to him calmly. You listened to all the complaints that he had and you started writing down all the complaints on a notepad. ठीक है. So आपने क्या किया कि एक जर्नल पे, एक नोटपैड पे आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दिया, सारी की सारी उसकी कंप्लेंट्स को लिखना शुरू कर दिया. आफ्टर दैट वन बाय वन करके यू स्टार्टेड सॉल्विंग हिज इश्यूज. ओके सर, क्या प्रॉब्लम था? डिले आ रहा था. ठीक है, लेट मी टॉक टू द मैनेजमेंट. रीजन पता चली, वेदर खराब था, गाड़ी आपकी खराब हो गई, दैट इज वाई आप उसका ऑर्डर प्रॉपर टाइम पे नहीं भेज सके. एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था, आपने बात करवाई, उसने एड्रेस समझाया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सेकेंडली, वो कह रहे हैं कि आपकी मैनेजमेंट बहुत स्लो है, आप उसके लिए उसको अपोलोजाइज करेंगे. ठीक है, यू विल काम हिम डाउन, यू विल ऑफर हिम समथिंग. thirdly, आप उससे कहेंगे सर आपने इतना प्रॉब्लम किया, आप यहाँ तक आए, लेट मी ऑफर यू समथिंग. आप उसको कोई डिस्काउंट दे देंगे, आप उसको मे बी कोई छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे देंगे टू काम हिम डाउन. उसकी यू नो यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस. सो सारे एक्शंस को वन बाय वन, पहले आप उसकी कंप्लेंट सुनेंगे, फिर आप उसको वन बाय वन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे अपने एक्शंस में. ये सब बातें आप अपने इंटरव्यूवी को बता रहे हैं. एंड देन कम्स द रिजल्ट. रिजल्ट क्या हुआ? कस्टमर हैप्पी हो गया. बहुत हैप्पी ना से ही, जिस सिचुएशन में, जिस तरीके से वो इंटर हुआ था, द जोन दैट ही वाज इन, वो उससे काम डाउन हो गया. एंड देन उसने बैड रिव्यूज अपने वापस लिए, आपको 2 स्टार या 1 स्टार नहीं दिया आपकी सर्विस को. ही गॉट काम्ड एंड देन ही वेंट. तो ये रिजल्ट था. सिचुएशन सोल्व हो गई, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई. आपके इंटरव्यूवी ने जब आपसे इस तरह का जवाब सुना, तो आपको क्या लगता है कि आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या स्टार मेथड बिहेवियर टाइप क्वेश्चंस को, सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करेगा? सो लेट्स understand this method with the help of few situations. So question number 1, describe a time when you had to deal with a difficult client. When you had to deal with a difficult client, जब आपको किसी difficult client से handle करना पड़ा. Let's answer this question using the star method. One day a client called and he sounded upset. He sounded furious. He sounded upset. हम काम करेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगे इमोशंस को डिफरेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब करने में. ओके, why he was upset? As his very important document, his very important parcel got delayed, so he came directly
to the company to receive it. To receive it. And he sounded very furious. So situation is done. Situation is done. Now we are going to talk about the task. Situation बता दी हमने. अब हम task के बारे में बात करते हैं. Next paragraph. My task was to calm him down, calm the customer and resolve his issue. That's it. Task is done. Then action. Talk about your actions. So I actively listened to him. Note down all his complaints and solved them sequentially. Okay, so with sequence we note it down, okay, and then via sequence we sort it out. I apologized for the delay and the inconvenience that he had to face. I apologized for the inconvenience and the delay he had to face. I also offered him the solution and a discount or a gift hamper or a small gift hamper to mitigate all the all the inconvenience that he had to endure. As a result, what happened as a result? As a result, the client got his parcel. The client received his parcel. The client received his parcel and called again to help me. He also appreciated me for the hard work. That's it. Okay.